आईटीसी क्लेम करा है वो एक जेन्युइन है और हमने ऐसी कोई गड़बड़ नहीं कर रखी जिसकी वजह से हमारा क्लेम हटाया जा सके या डिपार्टमेंट हमें रिजेक्ट कर सके। देखिए, आईटीसी आईटीसी इज द सोल ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जब आया था तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा और सीमलेस क्रेडिट मिलेगा, ये हमें बताया गया। तो यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो सीमलेस क्रेडिट को लेकर जाते हैं। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है और किसको ये प्रूव करना है। पहले जरा जीएसटी लॉ में समझ लेते हैं। वी हैव वन सेक्शन 155 which says that whenever any person is making a claim, whenever a person is making a claim of ITC, then burden of proving such claims lies on such person. यानी कि सीधा सीधा क्लेम की जिम्मेदारी आ जाती है जो पर्सन आईटीसी क्लेम कर रहा है। नाउ दैट पर्सन हैज टू प्रूव दैट हिज क्लेम इज जेन्युइन वन। लेकिन अगर आप ये समझे कि ये जिम्मेदारी तो हमें दे दी, लेकिन जीएसटी लाने का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड implementing GST? Now, this question arises after 6.5 years or 6 years and 3 months. Now, the GST came with an intent that it would reduce prices. Good evening, Parulji. See, you are connected us with us on LinkedIn. You please follow me on LinkedIn itself. So those who are connected, they can write their messages. This is free discussion, and I keep on doing discussions on such topics. So the seamless credit, see, unless there is seamless credit, you can't reduce your rates. You can't have a cascading effect. You can't reduce the cascading effect. And friends, we are live on 8 streams right now, and whatever comments you will make on any stream, it would be visible to others on other streams also. So if someone is connected from YouTube or Facebook or Twitter, so whatever they will write in comment section, which will be visible to other viewers also. So the issue is कि burden of ITC claim हम proof करें कैसे? Now this is very different problem. See, we have got one judgment of Honorable Supreme Court in case of Ecom Gill Coffee Trading Private Limited. So this judgment came on 13th of March this year. And I did not discuss this judgment because I thought कि judgment जो है ना वो VAT का है, and scheme of GST is very different from scheme of VAT, and I hope you all will agree with this. So a negative judgment or the scheme or the conditions of Karnataka VAT is very different from what GST is. भाई इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में प्रॉब्लम थी, तभी तो हम जीएसटी लेकर आए थे। द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग जीएसटी और इंप्लीमेंटिंग जीएसटी वाज दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन VAT regime or in indirect tax regime. But the judgment of Supreme Court, if we summarize in few words, says that burden of proof that claim of ITC is correct is on the assessee who has to discharge said burden, and such a burden of proof cannot be shifted to the revenue. Now, if we go with these words, it means the department will reject any ITC claim, and it is our duty every time to prove. In this judgment, court said that it is dealer's duty to prove that the seller is bona fide, means we are bona fide, we have proved the correctness of the credit, and we have to prove
who was the seller, whether he has paid taxes or not, and the who was the vehicle dealer, oh, sorry, who was the transporter, how the vehicle moved, which vehicle has moved, which one has carried those goods, and how they were delivered. तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आपने, या कहें कि सारी जिम्मेदारी आपने किस पर डाल दी? द बायर, द ऑनेस्ट बायर, मान गए. Now the question arises, what is burden of proof? भाई burden of proof तो कहीं explained है नहीं. Nobody has explained what is burden of proof. और ये जितना भी डिस्कशन होता है, whatever discussion we keep on doing, this we do for purchaser of goods, trader of goods. What about recipient of services? क्या वहां पर कहीं कुछ प्रूव करने की बात हो रही है? Now how they will prove कि सर्विसेज मूव हो गई हैं और आई एम द करेक्ट recipient of supply of recipient of services? See, in service sector there are two different things, especially when there is continuous supply of service. When there is continuous supply of service, then the taxable event and the billing event are usually two different events. And then how we will prove that we are the genuine recipient of services? See, the purpose of proving everything in this old fashioned way defeat the purposes of digitization and automation. See, हमें क्या चाहिए? In we are in 23rd year of 21st century. It is 2023. यहाँ पर 80s के लॉस की तरह हमें प्रूव नहीं करना चाहिए कि सारे कागज लाइए, आप मूवमेंट दिखाइए, वेइंग स्लिप्स दिखाइए. So we are moving towards digitization, and after say couple of years down the line, we would be moving towards automation. Bills भी individually कोई नहीं लेगा. They would be automated, imported through some software or tools. Then how we will prove these kind of things? And department cannot run away from their own responsibilities. अगर department यहाँ पर, let's say, let us consider we go square up. ठीक है साहब, डिपार्टमेंट ने एक व्यू सुप्रीम कोर्ट का आया, डिपार्टमेंट सेज दिस इज दैट डिसीजन, वी आर गोइंग टू यूज दिस. कोई बात नहीं सर, लिटिगेशन इसीलिए तो होती है. आप अपने पैतरे दिखाइए, हम अपने तीर आजमाते हैं. सो आई एम शेयरिंग यू few judgments of that regime which would help you to counter these kind of situations when department is trying to use e-com gill against you. Let us try, let us make a try. हो सकता है हम जीते, हो सकता है हम हारें, बट रिप्लाई तो करें. Let us not surrender at this moment. So let us discuss few cases which could be beneficial for you or which could be used by you. So cases where GST registration or vendor's registration has been cancelled retrospectively. The first judgment which I would like to share here or share here before you is very important judgment of Honorable Calcutta High Court in GST regime itself. Last year ये judgment आया था in case of Sanchita Kundu. In this case, ITC was denied to Ms. Sanchita Kundu on the basis that registration of her supplier has been cancelled retrospectively. Now, once these registration has been cancelled, and it you agree, you will agree with me. अगर कोई डिसएग्री है तो वो भी लिख दीजिए कमेंट में, या कोई एग्री है तो लिख दीजिए that today ITC claims are rejected merely on the basis of retrospective cancellation of your supplies. They don't go and investigate each and every case whether
that party has actually discharged the liability in cash or not, or say they have used correct ITC or not. सिर्फ आपके वेंडर का रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली तो सीधा सीधा आपको आईटीसी डिनाई करा जाता है। और एक नहीं, मैं मानता हूं कि हजारों केसेस में या शायद लाखों केसेस में पूरे इंडिया भर में ये काम हो रहा है। तो आप ऐसे केसेस में यू कैन यूज और टेक शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ संचिता कुंदू केस, where it was decided by the Honorable Calcutta High Court कि सिर्फ merely on the basis of retrospective cancellation of your vendor आपका जी आईटीसी डिसअलाउ नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट हैज टू डू ड्यू डिलिजेंस, वेरीफाई द जेन्युइननेस, एंड दे हैव टू प्रूव कनाइवेंस एंड कोलूजन। सो बिकॉज इस केस में कनाइवेंस प्रूव नहीं हुई थी, कोलूजन प्रूव नहीं हुई थी, सिंपली एंड मियरली ऑन द बेसिस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर्स ऑफ संचिता कुंदू का जीएस आईटीसी डिनाई करा गया, विच वॉज क्वेश्ड, रिजेक्टेड, एंड Calcutta High Court have said that during claim of credit, the amount was visible in her GSTR 2A, which has not been denied. And department has never raised the point of collusion between purchaser and the petitioner. तो ये केस आपके बहुत काम आएगा if you have if you get such kind of notices, you can take shelter of this. Then we come to second important judgment of Calcutta High Court in case of LGW Industries. Now, in this case, what has happened? Department ने disallow करा ITC on the claim that these supplies were raised from non-existing supplier जिनका बैंक अकाउंट भी फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ओपन करा गया था। उन्होंने कहा कि ये आपकी गलती है कि आपने अपने सप्लायर की आइडेंटिटी बिना सामान खरीदने से पहले चेक नहीं करी। See, today we live in a digital world, and especially the time after COVID has changed a lot. और आज की डेट में आप ये मानेंगे कि कई बार आप भी ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं, किसी से सोशल मीडिया से मिले या किसी ऐप से आपने बिजनेस डेटा देखकर परचेस कर ली, आप एक्चुअली उस वेंडर को नहीं जानते। ये आपके साथ भी होता होगा, आप भी बाइंग ऐसे ही कर लेते हैं, आप कोई फिजिकल वेरिफिकेशन जल्दी से नहीं करते। द टाइम हैज चेंज, दो डिपार्टमेंट लिव विद द माइंडसेट ऑफ 1980s, let them live with the 80s. We have to move towards globalization, digitalization, and automation. Let us live in 2023. Let's not go to 1980. उन्होंने कहा कि साहब आपने जिनसे परचेस करी उनकी आइडेंटिटी चेक नहीं करी। सर, मुझे परचेस करते हुए आइडेंटिटी चेक करना जरूरी कहाँ लिखा है लॉ में? वेयर इट इज रिटन दैट आई हैव टू चेक आइडेंटिटी? प्रोसीजर मेरा जो भी होगा, मेरे whatever corporate I am, if I go with a tender system, or if I issue an invoice, or if I have to issue a purchase order and other person has sold me goods, तो उसने मैंने परचेज ऑर्डर दिया, उसने मुझे गुड्स दे दी, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, गुड्स आ गए तो मैं पेमेंट क्यों रोकूंगा? फर्स्ट टाइम मैं डील कर रहा हूं, पेमेंट कर दिया। एंड देन दे सेड नो, वी आर rejecting your credit because these are non-genuine, non-existing taxpayers. The matter went to Honorable Calcutta High Court. Calcutta High Court said, no, this is not the correct way. Merely because you have retrospectively cancelled someone's registration and then you are denying ITC to the recipient. No, you have to cross-check in each and every case. Unless you cross-check, you cannot deny. And the denial should be when collusion and connivance should be proved. This is my view. The denial should be
only and only when connivance and collusion is proved, not merely on the basis of कि GSTR 2A या 2B में credit नहीं दिख रहा. No, you have to prove connivance. You have to prove collusion. There should be intention to evade tax, or there should be that you have proved that there was evasion of tax. Without proving this, everything should be subject to litigation. Then we have a judgment from Honorable Madras High Court. This is a judgment from VAT, क्योंकि ये VAT के जजमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें कहाँ मना है कि VAT के जजमेंट हम यूज नहीं कर सकते. कहीं ऐसा लिखा है, if department wants to rely on judgments of VAT, can we also rely on judgments of VAT regime? आप बताइए, yes or no? And why only VAT? I should go beyond this. मैं तो सेल टैक्स के जजमेंट भी लेकर आता हूं फिर. We have a very good judgment from on probably the correct name is Suresh Trading, Bombay High Court. 50s का जजमेंट है, वो 50s का जजमेंट ले आते हैं, क्या हो गया? कुछ लिमिट है क्या लिटिगेशन में? So in this case, Madras High Court said that no, merely because you have cancelled the registration, तो जिस डेट में आप कैंसिल कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल कर रहे हैं, फ्रॉम द डेट विच यू आर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन, आप वहां से आगे का क्रेडिट नहीं देंगे. लेकिन जो उस डेट तक ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, एंड व्हेन द टैक्स इज पेड, यू हैव टू गिव क्रेडिट. सी, देयर शुड बी कट ऑफ. एक तो रेट्रोसिलेशन ही बंद हो जाना चाहिए, जिस तरह से ये आईटीसी मिसयूज कर रहे हैं. डीवाई बीथर, अगेन अ केस ऑफ आईटीसी, where Honorable Madras High Court, in this is a case of GST 2021 का जजमेंट है, उन्होंने कहा कि साहब ऐसे नहीं है, अगर इसने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी, देन you go and try to recover money from the vendor itself. आप वेंडर से पैसा लीजिए, आप वेंडर से पैसा लीजिए, आप उसको ढूंढिए. आप असेसी से डायरेक्ट रिकवरी नहीं कर सकते अनलेस यू हैव डन recovery or you have tried to recover money from the vendor. Mohit Jindal ji, now when you are saying that okay 10% हमें देना है, सर 10% तो मान लीजिए कि देना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट है, when you win the case it will be refunded to you. सर आपकी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख के टैक्स का इशू है, और लेट्स से 5 लाख इंटरेस्ट पेनल्टी है, टोटल 10 लाख की डिमांड है, आपको डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% देना है, सिर्फ 50,000 जमा करना है, 9.5 लाख की रिकवरी रुक रही है. सो यू आर पेइंग ओनली 50,000 एज प्री डिपॉजिट, 9.5 लाख रिकवरी इज स्टॉप्ड. सो प्लीज डोंट से दैट दिस इज अ हार्डशिप. Of course, we cannot say that for everything it might be a hardship for few cases, but sir, रेवेन्यू का भी इंटरेस्ट देखना है, फ्री में वो कैसे सुने आपकी. So because there were, in this case DY Bethel में, they have not tried to recover money from the seller in first place, therefore, and they directly came for recovery from this recipient, therefore it was rejected. Such notice was quashed. तो आप मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट भी अपने फेवर में यूज कर सकते हैं. 3 जजमेंट मैंने आपको दे दिए विच वर फ्रॉम जीएसटी regime, संचिता कुंदू, एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, बोथ कलकत्ता हाई कोर्ट, एंड डीवाई बीथल फ्रॉम ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट. Now this is another Karnataka Appellate Tribunal order. In this case, see, this is in the line of what GST department is, or what Supreme Court says. They are saying that it is the duty of the person who is claiming credit that he has to manage, or he has to substantiate his claim with documents, and it is the right of the department to disallow ITC. I agree with this. लेकिन कहां पर डॉक्यूमेंट देने हैं वो तो बताइए. डॉक्यूमेंट तो चलो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे. व्हाट डॉक्यूमेंट्स कुड वी गिव? We could give purchase order, and that is not available in all of the cases. We could give invoice,
or it could be e-invoice or normal invoice, e-way bill, bank transactions, whether it is through check, NEFT or RTGS. We could give mailing slips. Other than this, how can I prove the genuineness of my supplier? This is very, very difficult to prove. Very difficult. Then cases where ITC is not paid by the supplier. So we have Quest merchandising, or some in some books it is noted as Arise India, Delhi High Court. See, similar law was in Delhi High Court. Delhi High Court में भी similar provisions थे, denial of ITC, और डिपार्टमेंट ने बहुत लोगों का आईटीसी डिनाई करा. मैटर कोर्ट में गया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ मिसमैच के केस में आप क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते. आप क्रेडिट सिर्फ मिसमैच के केस में डिनाई नहीं कर सकते. आपको इंडिविजुअल एवरी केस you have to do investigation and you have to prove collusion and connivance. See, similar lines पर similar लिखा हुआ था, लॉ ऑलमोस्ट सिमिलर है, और उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि साहब आपको इंडिविजुअल केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोलूशन प्रूव करना है, कनाइवेंस प्रूव करना है, तभी आप आईटीसी डिनाई कर सकते हो. Merely because there is a mismatch or you feel that someone has cheated the department, you cannot deny ITC credit. See, once you deny ITC credit, the business suffers. और इस केस के अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट भी गए. सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ये अफर्म किया कि नहीं, जो आप बात कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है वो सही कह रही है. यू कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द रेसिपिएंट. सी, परचेजिंग डीलर की अपनी एक लिमिटेशन है, उसको बिजनेस करना है. वो सारे दिन सिर्फ आईटीसी ही मिसमैच मैच मिसमैच इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता. देन वी हैव श्री Vananga agency's judgment from Madras High Court. Now, this judgment is not relevant now. See, because मैंने कहा ना कि स्कीम ऑफ वैट एंड स्कीम ऑफ जीएसटी आर डिफरेंट. तो स्कीम ऑफ वैट में उन्होंने बोला था कि यहाँ पर इनके पास तो पावर ही नहीं है कि आपका आईटीसी रिवर्स करा जा सके. बीरूलाल बालचंद, वन ऑफ द सेलिब्रेटेड जजमेंट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और इसमें उन्होंने कहा था दैट यू शुड have the mechanism like this which should differentiate between honest and dishonest dealer. See, अगर आप honest और dishonest dealer में differentiate नहीं कर रहे और law same चल रहा है, तो आपके काम का नहीं है. आपको जो डिनाई करना चाहिए या परेशान करना चाहिए, वो उसको परेशान करना चाहिए who is dishonest, who is trying to cheat to the department. जो ऐसे काम नहीं कर रहा, आप उसको डिनाई मत कीजिए. एंड इसमें उन्होंने बड़ा बढ़िया वर्ड लिखा दैट यू शुड नॉट आस्क असेसी टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू कलेक्ट मटेरियल टू प्रूव हिज ऑथेंटिकेशन. सो आई होप आई हैव गिवन यू good judgments. Those who might support your case laws, and hope so this will help you in cases where you find this difficult. So that's all from my side. If you have any other point, we'll try to share it. And thank you. Thanks a lot. Hope this video helps you in case of whenever there is some sort of litigation, or when there is some sort of issues related to ITC or ITC reversals. Hope so that this video will help you, and thank you. Thanks a lot.